A very good morning to all of you and welcome to BYJU'S Exam Prep, the most comprehensive preparation app for all exams. As we all know, from Monday to Thursday, 11 a.m. in the morning, we come up with the Hindu analysis. Today is 3rd October, that is Tuesday. So actually yesterday was 2nd October, the date on which Mahatma Gandhi was born, and in fact 𝗟𝗏𝗀𝗀 𝗏𝗏 was also born. I hope you are aware of that. So yesterday was 2nd October. Okay. So can you please tell me that one is Mahatma Gandhi's birthday, okay? Another is 𝗟𝗏𝗀𝗀 𝗏𝗏's birthday, right? So 𝗟𝗏𝗀𝗀 𝗏𝗏 was the Prime Minister of India during which period? कोई बता सकता है? Period कौन से साल में थे? And he gave a very famous slogan. Can anyone tell me a very famous slogan given by Mr. 𝗟𝗏𝗀𝗀 𝗏𝗏? कोई बता सकता है? Anyone? Okay, so today is 3rd October, Tuesday. और आज दो important article है. First is Nobel Prize in Medicine has been announced, which is very important. The next one is the result of Bihar caste census. So I hope you are aware caste census has been very much in the news. And in fact, people filed a petition in Patna High Court that then went to the Supreme Court to get it stopped and all. So these things were very much in the news in the last 5-6 months as well. So caste census becomes important. You can say Mr. 𝗟𝗏𝗀𝗀 𝗏𝗏 became the second Prime Minister of India after Jawaharlal Nehru's death. Actually, after Jawaharlal Nehru's death, there was Mr. Guzarilal Nanda for 2 months as an interim Prime Minister. But yes, second official Prime Minister would be Mr. 𝗟𝗏𝗀𝗀 𝗏𝗏, and he was from 1964 to January 1966. Yes. Okay, he died in Tashkent and all. I hope you are aware of that. So yes, Jai Jawan, Jai Kisan, very good. नहीं कल yesterday class नहीं थी 6 PM पे जी राव because yesterday was 2nd October. ठीक है. So basically Jai Jawan, Jai Kisan was a very famous slogan given by Mr. 𝗟𝗏𝗀𝗀 𝗏𝗏. तो ये सब basic चीजें आपको पता होना चाहिए. Okay, now let's start with this Nobel Prize in Medicine to duo मतलब दो लोगों को given to 2 people who have actually paved the way for the mRNA COVID vaccine development. So now the question is, which of the following actually Nobel Prize in Medicine of Physiology is awarded by? Your options are Royal Swedish Academy of Sciences, Norwegian Nobel Committee, the Nobel Assembly at Karolinska Institute, none of the above. Your time starts now. बताइए. Actually वो इंस्टीट्यूट की स्पेलिंग ऐसे ही लिखते हैं वो in their language, तो इसीलिए मैंने ऐसे लिखा है. Otherwise लास्ट में टी नहीं होगा. Can anyone tell me? नोबेल प्राइज इन, देखो ध्यान रखना, दिस इज मेडिसिन और फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी नहीं है, ये फिजियोलॉजी है. ओके, सो वी कॉल इट एज नोबेल प्राइज इन मेडिसिन और नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी. ओके, सो इट इज गिवन बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस. आई थिंक वी रिमेंबर. इसका मतलब आप लोग मॉक टेस्ट वगैरह नहीं लगा रहे हो. आई रिमेंबर देयर वाज अ क्वेश्चन इन मॉक टेस्ट वेरी सिमिलर टू दैट, and I explain in that video, mock test video. So आप लोग लगता है mock test नहीं लगा रहे, please guys attempt it. Attempt all those mocks that we are providing it, especially for paid classes I'm talking about. सारा mock attempt कीजिए. We provide the video also, and these videos are very important. ठीक है, लोग समझते हैं अरे छोड़ो ना mock test देखे क्या होगा, अरे वहीं से तो सब कुछ आता है. So C is the right answer to this question. रॉयल स्वीडिश एकेडमी फिजिक्स, केमिस्ट्री और इकोनॉमिक साइंस के लिए कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट देती है, मैंने बताया है मॉक टेस्ट के वीडियो में. आई स्टिल रिमेंबर दैट. सो सी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन. जस्ट हैव एन आइडिया बिकॉज यस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. नोबेल प्राइज से रिलेटेड देखो अभी तक टिल नाउ दे हैव नॉट आस्क्ड क्वेश्चंस इन डिटेल अबाउट नोबेल प्राइज. मतलब जब से सिलेबस चेंज किया है 2020 से आई एम टॉकिंग अबाउट नाउ. बट नोबेल प्राइज विल ऑलवेज बी इंपॉर्टेंट इन एनी ऑफ द एग्जाम. किसी भी एग्जाम में जहां भी जीके पूछा आता है वहां नोबेल प्राइज बहुत इंपॉर्टेंट होता है. कभी भी पूछा आ सकता है बिकॉज ऑफ कोर्स आई होप यू आर अवेयर दैट नोबेल प्राइज इन जनरल इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, सो इट हैज बीन गिवन टू 2 people. One is a lady, another is a male. Okay, so Hungarian biochemist. So actually Katalin Kariko. So she is actually from Hungary. Hungary is a place in country in Europe. And American scientist Drew Weissman, they have got it Nobel Prize for development of discoveries concerning nucleoside-based modification that enable the development of effective mRNA vaccine against COVID-19. So basically their research was based on mRNA
vaccine. Now what is M stands for in mRNA? Messenger RNA होता है. It is a type of molecule that carries instruction from the DNA to a cell's cytoplasm where those messages are read to produce various proteins. मतलब आप इस तरह समझ लो कि mRNA enables to produce a specific type of protein. एक खास किस्म का प्रोटीन बनाने में हेल्प मिलता है. Okay, now so in case of vaccine it acts as कि जैसे for example if we want to develop a immunity against a particular disease, for example COVID-19, so mRNA, a particular mRNA will help us in developing a certain type of protein, and this protein will be helpful in fighting the COVID-19 in future if there is any attack happening in the future. ठीक है? Okay. तो यही समझना है कि mRNA इसी पर वर्क करता है. Now, so it is a actually temporary piece of genetic code that can create a protein or repair a damage. तो प्रोटीन एक खास किस्म का क्रिएट करता है जिससे काफी बेनिफिट भी मिल सकता है. Okay, just have an idea about that. Now the question is, since we are talking about mRNA COVID vaccine, the question is India's first mRNA COVID vaccine is. Your options are 𝗟𝗂𝗴𝗏 19, 𝗖𝗂𝗏𝗀, Covishield, Covaxin. What is the right answer to this question? बताइए. क्योंकि mRNA कोविड वैक्सीन की वजह से इस बार नोबेल प्राइज मिला है. mRNA वैक्सीन के बारे में पता होना चाहिए. You have to go and find out what are the names of mRNA COVID-19 vaccines in the world level also. इंडिया लेवल पर भी और वर्ल्ड लेवल पर भी. बताइए. We have discussed it earlier as well. I remember it. That mRNA COVID vaccine. Yes, very good. Priya Chavan, Jia, Garima Chaudhary, Gauri, you are right. 𝗟𝗂𝗏 19 developed by कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? Who has developed it? Which pharmaceutical company? So A is the right answer. India's made mRNA vaccine price at इतना प्राइस, ठीक है, 2292 will be available at a booster dose. ठीक है. 𝗟𝗂𝗏 OM मतलब होता है ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए, नॉन स्पेसिफिकली it has been made. Yes, GR और प्रिया चवन, जतिन सिंह, रंजना. A is the right answer to this question. एक और 𝗖𝗂𝗏 जो डीएनए प्लाज्मिड कोविड-19 से बना है. ठीक है. So just have an idea. Yes, पुणे बेस्ड एक कंपनी है, उन्होंने बनाया है. ठीक है. यस, जेनोवा बायोफार्मा. गुड. गौरी साइटी. हाँ, सॉरी. ओके, सो जस्ट हैव एन आइडिया अबाउट इट. फर्स्ट पेज में एक और आर्टिकल था. 36% ईबीसी यानी एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास लार्जेस्ट ग्रुप इन बिहार शोज कास्ट सर्वे. Look, actually generally at world level, I mean at national level we know the concept OBC, other backward caste. ठीक है. लेकिन in Bihar there is a concept, another concept also called as EBC, extreme backward caste. ये OBC से भी मतलब एक generally considered as on status, on economic status below OBC. Okay, so there is a concept of EBC as well. So actually recently क्या हुआ? I hope you are aware, caste census was happening and all in the state of Bihar. People went to the court to get it stopped and all, but finally it was cleared by the court as well. And these are some of the caste percentage and all religion percentage. So this much religion wise people are living in the state of Bihar. Caste wise 27% OBC, extremely backward class 36%, scheduled caste 19.65%, scheduled tribe 1.68%, unreserved 15.52% and all. So only 15.52% are actually, you can say, the people of general category. The rest of them are actually here. Okay, yes. Then yes, these are the things. इसमें report देखो, इसको याद नहीं करना है इतना percentage wise. I don't think they'll be asking it, but have a basic idea. एक बार थोड़ा सा देख लेना, ठीक है. So that is what they have called it as बिहार जाति आधारित जनगणना, ठीक है. Whatever you can say. हाँ, बिहार जाति आधारित गणना they are calling it. जनगणना होगा, I think. Right, so it means actually Bihar caste based survey. That is what it means in English. Okay, yes. So Yadav makes up to 14.26%, Kushwaha is 4.27%, Gurmis are 2.87%. तो इतना सारा percentage याद नहीं करना, because just have an overall idea. So the total population of Bihar is somewhere around 13 crore. So these are the basic things you should be knowing it. ठीक है? Okay. Yes. Now first page पे एक और article, the High Court rules against quota in minority institution. Okay. We have discussed about it. Which article talks about minority institution of the Constitution? We have talked it in the paid classes. So in a significant judgment, Madras High Court has ruled that educational institution run by religious and linguistic minorities. ये religious and linguistic minority कहाँ mentioned है? Article 30. Religious and linguistic minorities, right? Need not to follow the rule of reservation with respect to SC, ST and OBC. So SC, ST and OBC reservation, it is not compulsory to be given in minority institution. This line is specifically mentioned in the Constitution as well.
देखो, religious and linguistic minority, the term is mentioned in Article 30. ठीक है? Now, but this one, that SC, ST and OBC reservation may or may not be implementable in minority institution is mentioned in Article 15 Clause 5. ठीक है, यहाँ देखो, this is Article 15 Clause 5. If you read it, we have discussed it कि Article 15 का जो exception है 3, 4, 5 में you will find exceptions of Article 15, right? So Clause 5 में लिखा है कि लिखा है ना, for socially educationally backward class, SC, ST, there can be reservation, but other than minority education institutions. It means, यहाँ पे साफ लिखा, it means the reservation that is provided to SC, ST and OBC may not be given in minority education institution. Okay, if they want they can give, otherwise they can skip. ठीक है, is it clear? You got it? So just have an idea. उसी को that has been clarified by Madras High Court. Okay, so this is for next year. Anyone preparing for next year? The exam most likely would be in December 2024. He or she can go for this course. If you have any query, call on this number 95388 95678. Okay? Yes. Okay, yes, huh? Okay, then 2024 UG test series is there. We are running it. Then, of course, everyone should attempt it. Yes, जो लोग भी दे रहे हैं attempt करें. Because we have seen many people are not attempting it. So those who are from paid batch, at least आप लोग सारा attempt करो. All India Open Mock भी हम लोग इतना सारा conduct कराए. Please do not skip the mock test. That would be very beneficial. Please attempt those. ठीक है? Yes. Okay, let's start with this main editorial. The narrative of development and populism. He is actually slightly critical and all. So basically, development मतलब क्या होता है? विकास मतलब development means where actually progress, growth of everyone, inclusive growth and all. Populism means populist scheme. It means the decision taken by anyone, let's say by any officer or any political party in power or anyone else to become famous. तो इसको populism word कहते हैं, ठीक है? So he is actually talking about development and populism and all. Article 29 सबके लिए गरिमा, we have talked it in the paid classes. ठीक है? आप fundamental rights वाला वीडियो जाके देख लेना. We have discussed it about Article 29. ठीक है? In the paid classes. हाँ, specifically minorities के लिए Article 30 mentioned है. ठीक है? Yes. Okay. Yes. Now, so basically he's talking about this, that Prime Minister inaugurated 50,700 crore of election bound state of Madhya Pradesh. So Madhya Pradesh mein election is very near and recently some projects have been announced. These are they are talking about. ठीक है? So ये सब चीजें जैसे for example 2,500 monthly financial assistance to women, gas cylinder at 500 rupee, free travel for women, state bus transport bus, schemes promising an annual financial assistance of 15,000. So these are some of the state level schemes. ठीक है, अब इतना याद नहीं रखना है because this is specific to a particular state. So just have an idea. ठीक है, both these announcement in conjunction show development, populism and all. So basically, yes, it is talking about government development as well as populism. That is what the author is talking about. There are no two arguments on the need to achieve higher and better development. However, there exists a need to assess its trajectory and inclusivity and all and welfare schemes and all. तो मतलब वो बता रहे कि yes, it is true that yes, we should focus on development, but at the same time we need to assess the inclusivity. Yes, मतलब सबको लेकर चलना, सबका साथ सबका विकास. It means that it should cover all the people. Let's say women, children, old people, minority, weaker section, everyone physically disabled. So that's the idea of inclusivity. ठीक है? So that is what they are talking about. While the need for accelerated development is sold and all. तो ये सब बता रहे हैं, ठीक है, ये सब आप पढ़ लेना. मतलब equating development to physical mega infrastructure could over time become a dangerous obsession for two reasons. तो actually क्या होता है? Whenever we talk about development, तो होता कि जो common man actually thinks when it is visible development. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपके आसपास रोड बन गया, फ्लाईओवर बन गया, तो यू विल सी कि यस डेवलपमेंट इज हैपनिंग. सो दैट्स कॉल्ड एज विजिबल डेवलपमेंट. फॉर एग्जाम्पल रोड, हाईवे, बिग बिल्डिंग्स, ओके, बिग इंफ्रास्ट्रक्चर. सो इफ यू सी इट इन योर सिटी और कहीं भी आप जाओगे देखोगे, आपको लगेगा 4-5 साल के अंदर हाँ बहुत सारे फ्लाईओवर बन गया, रोड बन गया, बिल्डिंग बन गया. सो यू विल से यस डेवलपमेंट इज हैपनिंग. बट देयर इज अनदर एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट. That is called as, for example, किसी ने maternal mortality rate reduce हो गया, child mortality rate reduce हो गया, health indicators improve हो गया, ठीक है, education में indicators improve हो गया. कैसे improve किया सकता है? मान लो let's say for example the government has decided to hire the teacher which is more better quality teacher with proper exam. तो वो आपको दिखेगा नहीं. The visibility of those developments are not very clear.
अब पता नहीं चलता ना, कोई आदमी देखेगा उसको, विजिबिलिटी से आपको नहीं नजर आएगा, आंख से नहीं नजर आएगा कि अच्छा हाँ एजुकेशन में पहले ऐसे था, अब टीचर अच्छे आने लगे, अनलेस एंटिल द पर्सन हु इज स्टडीइंग देयर विल रियलाइज एंड टेल बैक। तो यही बता रहे हैं कि ये डेवलपमेंट को जो सिर्फ विजिबल मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं और उससे बियॉन्ड भी होता है। ओके, यस, हाँ, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। सेकंड थिंग इज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इट, इसके विजिबल इंफ्रास्ट्रक्चर या विजिबल मेगा प्रोजेक्ट्स की नेगेटिव इंपैक्ट्स भी होते हैं। ओके, मान लो सिर्फ अगर हम लोग रोड्स कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग, हाईवे बनाना शुरू कर दें, if we keep on building roads, then it is having a negative impact. And for example, we are seeing it in Himachal Pradesh. Why? Because we have done perhaps some more development. I mean, we should have restricted ourselves as far as making houses, bridges, etc. are concerned. So, itne sare jo landslides hain which happen in Himachal and other places, perhaps this is because of our maybe overdevelopment, या जो भी कह लो आप, whatever you can say. So this happened in the state of Himachal and all. So उसका दोनों एस्पेक्ट होता है, ठीक है। So development not only means whatever we are seeing through our eyes, but there is another aspect also. ये वाला एस्पेक्ट जो है ना, जो सेकेंड एस्पेक्ट है, मतलब जैसे मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, ये आपको डेटा से पता चलेगा, ये नजर सामने से नहीं नजर आएगा। रिपोर्ट्स एंड डेटास विल टेल यू, ठीक है। ऐसे अपैरेंटली नहीं दिखेगा, रोड, बिल्डिंग, हाईवे सब दिख जाती है, बट अगर चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट इंप्रूव हुआ, अपीयर तो नहीं होगा, तो आपको डेटा से कंपेयर करके पता चलेगा that okay, in the past 5 years back in my state, this was the maternal mortality rate, now it has improved. So you can say yes, development is happening. Okay, so this is actually the difference between the two. अदर उत्तराखंड के बारे में उन्होंने एग्जांपल बताया 2013 में, then he is talking about चार धाम यात्रा. It has strategic purpose also, religious and strategic both reasons मैंने बताया भी है. However, one of the thing that has been questioned is related with environment, कि कहीं ये environment पर असर ना कर जाए, and also these are also the things being talked about, है ना। तो ये बता रहे हैं पॉपुलेशन की बात करें, जिससे मतलब the decisions which makes people popular and all, तो ये सब वो बता रहे हैं, ठीक है। So conventional models of economic growth did not attach much importance to distribution as it expected to be an inbuilt consequence of growth. हाँ, अब देखो क्या होता है, एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन, यानी पहले जो कन्वेंशनल मेथड होता था इकोनॉमिक ग्रोथ का, वो वी बिलीव दैट देयर इज नो नीड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। एक बार अगर इकोनॉमिक ग्रोथ होगा रिच लोग का, तो अपने आप जो है, इसको कहते हैं, देखो लिखा होगा ट्रिकल डाउन, हाँ लिखा ना है, just he actually means to say that for example earlier there was a belief that okay, if the rich starts becoming more rich, the money will percolate down to the poor people. इसको कहते हैं ट्रिकल डाउन अप्रोच, ट्रिकल डाउन इफेक्ट। यानी अगर रिच जो है, अगर समाज का अमीर होते जाएगा, तो अपने आप नीचे वाला तबका भी अच्छा बेटर होते जाएगा। ओके, दिस इज द थ्योरी ऑफ इकोनॉमी। However, this has been criticized by many. जैसे फॉर एग्जाम्पल इट हैज बीन क्रिटिसाइज्ड बाय मिस्टर अमर्त्य सेन एंड वेलफेयर इकोनॉमिक्स वाले अप्रोच वाले लोगों ने इसको क्रिटिसाइज भी किया कि नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ट्रिकल डाउन करे, हो सकता है रिच ही के पास रह जाए। ओके, सो द रिच विल कीप ऑन रिच बिकमिंग रिच एंड द पुअर्स मे नॉट गेट द बेनिफिट ऑफ दोस डेवलपमेंट। ओके, तो ये एक मतलब डिबेट है इकोनॉमिक्स में, वी आर नॉट गोइंग इन दैट डिबेट। ओके, सो अदरवाइज विल गेट डाइवर्टेड, बट एक आपको आइडिया लग गया होगा ना। Okay, the next one is capturing the range. India needs all-weather insurance against vagaries. Vagaries मतलब क्या होता है? वही मतलब negative aspect, negative effect of global climate, है ना, या anger of global climate and all, है ना, yeah, so for the first time since 2018, India has reported deficit. ये सब मैंने बताया भी है कि we are actually not seeing good rainfall. जितना होना चाहिए उतना बारिश नहीं देखा गया, इनफैक्ट अगस्त में तो बहुत ही खराब था। Okay, so India received 82 centimeter rainfall, nearly 6% lower than 89 centimeter from June to September, है ना। And one of the reasons cited is El Nino. तो ये बता रहे हैं कि if there is El Nino in Southern Pacific, ये मैंने कितना बार बताया बाप रे, so southwest monsoon will be lesser. Yes, it gets weakened. अगर यहाँ पर La Nina होगा, the opposite of that, La Nina is the opposite of El Nino, the southwest monsoon gets stronger, ठीक है, एक दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट होता है, ठीक है। ओके, थोड़ा सा आप एल नीनो ला नीना के बारे में पढ़ लीजिएगा, बिकॉज दैट इज स्लाइटली इंपॉर्टेंट, ठीक है। ओके, दैट इज व्हाट इज बीइंग बिटवीन 2019 to 2022 द इंडियन मॉनसून आर सिग्निफिकेंटली इंपैक्टेड बाय द ला नीना एज वेल एंड ऑल, ठीक है। ये सब बता रहे हैं लीनो ला नीना एक्चुअली डू अफेक्ट द रेनफॉल, ठीक है। सो वी हैव डिस्कस्ड इट। हाउएवर ही इज टॉकिंग अबाउट दैट देयर आर प्लेसेस वेयर हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, हरियाणा यहाँ फ्लड आ गया, so we are talking about El Nino causing less rainfall, southwest monsoon, but at the same time floods in this region. तो ये कैसे हो गया? हाँ, El Nino मतलब little boy, La Nina मतलब little girl, good. So basically उसका रीजन कुछ और था. The reason was not southwest monsoon.
The reason was what? From Mediterranean Sea, western disturbance comes. Yes, मैंने बताया था, which generally comes in winter. ठीक है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो आता है ना वो विंटर में आता है, बट दिस टाइम इट केम इन समर. तो जो मेडिटेरियन सी से बारिश जो आई वो इतना हेवी हुआ कि इट कॉज लैंडस्लाइड्स इन द हिमाचल रीजन एंड ऑल. यस, तो यहाँ लिखा होगा कहीं पर, है ना, देखो मेडिटेरियन रीजन, है ना. वी हैव डिस्कस्ड इट इन द पास्ट. वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दैट्स कॉल्ड एज, है ना. यस रमेश, गुड. हाँ, यस गौरी, यस. जनरली वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता है ना वो दिसंबर जनवरी में नहीं, कोल्ड में आता है, विंटर में आता है इंडिया में. एंड दिस इज बेनिफिशियल फॉर वीट. इसलिए आपने सुना होगा पंजाब हरियाणा में वीट बहुत होता है. वीट के लिए थोड़ा सा हल्की सी बारिश ठंड में अच्छा माना जाता है, रबी क्रॉप एंड ऑल, है ना. बट दिस टाइम एक्चुअली हुआ ये था कि ऐसा लिखा हुआ था न्यूज़पेपर्स में कि उतना आया नहीं था विंटर में, और उनकी उल्टा बल्कि समर में आ गया. एंड दिस कॉज्ड एक्चुअली लैंडस्लाइड्स एंड ऑल. ठीक है. At the other end of the spectrum, where a drought-like condition in Maharashtra, extreme stress reported in Chhattisgarh, Bihar, Karnataka and all. Okay. और इसी वजह से इनफैक्ट कावेरी डिस्प्यूट इज आल्सो हैपनिंग एंड ऑल. तो एक दूसरी चीज है कि महाराष्ट्र में जो इस रीजन में होता है, विदर्भ वगैरह रीजन, ईस्टर्न महाराष्ट्र है वहां पर, या रायलसीमा, ये सब रीजन है, तेलंगाना, इसमें जो थोड़ा सा वाटर डेफिसिट आसानी से हो जाता है, बिकॉज ऑफ कोर्स दीज आर नॉट वेरी हाई रेनफॉल एरियाज. ठीक है. सेकंड थिंग इज, आई होप यू आर अवेयर, दिस ईयर वी हैव सीन सम डिस्प्यूट्स और सम इश्यूज रिगार्डिंग कावेरी वाटर. जब बारिश कम होती है तभी तो पानी के लिए मतलब इशू होता है, अदरवाइज अगर बारिश बहुत होगी तो फिर क्या जरूरत है ना डिस्प्यूट का. So that is why whenever there is rainfall deficit and all these things do cause problems and all. और उससे बहुत सारे कुछ असर पड़ता है ना. So the spatial and temporal variation, spatial मतलब space wise, temporal मतलब time wise. ठीक है ना, space and time हम बोलते हैं ना, जगह की वजह से और वक्त की वजह से, है ना. Variance of the monsoon reiterates the need to invest in more resilient infrastructure that can be an all-weather assurance against unpredictable vagaries of the global climate. तो अब देखो ये क्या होता है. Yes, कावेरी डिस्प्यूट पढ़ लेना. Yes, मनदीप. Yes, हाँ. So basically, they are saying कि we have to have a foolproof plan, or you can say we should have a all-weather plan. जैसे for example अगर बारिश नहीं हुई तो भी हम लोग के पास प्रोविजन होना चाहिए. तो क्या प्रोविजन होगा? जैसे वाटर हैंडलिंग के लिए बोला जाता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये टेक्निक मानी जाती है. फिर एक और उसी का पार्ट है एक्चुअली, उसको कहते हैं वाटर शेड मैनेजमेंट. एक ही हो गया. ठीक है. Then there is a concept called as drip and sprinkler irrigation. आपने सुना है? Have you heard it? Drip and sprinkler irrigation. In fact, we have taken this technology from Israel as well. जब भी इंडिया इजराइल रिलेशन की बात होती है ना, ये वाला टेक्नोलॉजी दिखाता है. ओके, वाई? बिकॉज ड्रिप एंड स्प्रिंकलर में क्या होता है कि इरिगेशन विद द हेल्प ऑफ इन सच अ वे दैट मिनिमम वाटर इज यूज्ड. कम से कम पानी से इरिगेशन या सिंचाई कर लिया जाए. दैट्स द आइडिया ऑफ ड्रिप एंड स्प्रिंकलर इरिगेशन. तो ये सब टेक्नोलॉजी डेवलप करना चाहिए, है ना. बिकॉज दिस विल हेल्पफुल कि अगर बारिश कम हुई तो भी काम चल जाए, या कोई इरिगेशन की टेक्नोलॉजी हो, है ना. इट शुड बी मेड मोर सक्सेसफुल एंड ऑल. लगभग ओनली 50% ऑफ द पीपल एक्चुअली 50% एग्रीकल्चर आर एक्चुअली इन इंडिया रेन फेड. इन्हें समझो आधा एग्रीकल्चर जो इंडिया पर है वो बारिश के भरोसे होता है कि अगर बारिश हुई तभी सक्सेसफुल होगा. ओके, सो दैट इज व्हाट थिंग्स आर बीइंग टॉट. तो इसकी जगह पर रेन फेड पे भरोसा किए और भी कुछ टेक्नोलॉजीज होनी चाहिए ना. सो दीज आर द थिंग्स द ऑथर इज टॉकिंग अबाउट. यस, नाउ क्रिमिनल लॉज, बेल्स एंड हॉलो डिकोलोनाइजेशन एंड ऑल. तो ये भी थोड़ा सा क्रिटिकल ही आर्टिकल है. देखो एक्चुअली क्या है, आई होप यू आर अवेयर, वी आर विटनेसिंग द न्यू लॉज, लाइक इंस्टेड ऑफ आईपीसी देयर विल बी बीएनएस, है ना. और भी बहुत सारी इस तरह की मतलब लॉज वगैरह बनने की बात हो रही है. सो वन ऑफ द एस्पेक्ट दैट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट इज डीकोलोनाइजेशन. डीकोलोनाइजेशन मींस वी आर कमिंग आउट ऑफ द कोलोनियल पास्ट. मतलब बहुत सारी जैसे आईपीसी 1860 में बनाता है ना. सो मेनी अदर थिंग्स लाइक इवन 124th एडिशन वाज आल्सो इन 1870 में आईपीसी में डाला गया. सो वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू कम आउट ऑफ दोस बैगेजेस एंड ऑल. ठीक है. कॉलोनाइजेशन मतलब ये होता है कि और कॉलोनाइजेशन में क्या था, ऑपरेशन वेयर द कॉलोनीज बिकम व्हीकल्स ऑफ सुप्रीम कॉलोनियल पावर. हाँ, कॉलोनीज होते जैसे कॉलोनाइजेशन, जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड ऑल in India, it was actually symbolized with oppression, because there have been a lot of reports where actually British oppressed the poor people, the farmers, the peasants, or those whosoever spoke against British and all. So these are the things the author she is talking about. ठीक है, तो उन्होंने examples वगैरह दिया and all. A decolonized or a post-colonial law then would necessarily need to reflect the change in the relationship. So yes. So before that, like for example, state यहाँ पर government की बात हो रही है. So government and citizen relationship before independence was different, but now after independence should be different, है ना.
यानी our relation should be better, है ना? Because now, I mean, this is a government, not the British government, but the government of India, and we should have a improved relation with the citizen and government and all, है ना? So this fundamental shift changes the process of law-making priorities and all the purpose of law. So that is what she's talking about, that the purpose and the laws making should actually reflect that, है ना? That a notable feature of colonization is suppression. तो ये बता रहे थे कि one of the aspect of colonization was suppression of in the guise of security and all. So that is what she is talking about. So this idea should be removed in modern day times and all. है ना? ये सब बता रही है ना? So she's giving example of UAP and all. ठीक है? So the hype of decolonization will remain unfulfilled because the state has not indicated and all. So मतलब she's actually slightly critical of that. That yes, decolonization is should be done in complete sense. That is what she is talking about. Then we should actually leave all the colonial past and all. Okay, so that is what she has given examples. Okay, so like say criminal procedure code authorizes police to make measurement of convicts accused, even those taken into preventive detention. जिनको preventive detention में arrest किया गया, I mean there also the biometrics or the measurements can be taken, जैसे footprint वगैरह जो होता है, fingerprint and all these things. Okay, so just have an idea about that. Okay, so though the idea of decolonization must be seen in opposition to colonization, that is not all it is. वही बताना चाह रही, ठीक है ना? So actually इसमें थोड़ा सा debate भी होता है that कि what should be actually the things. So we need to balance it. कि अगर पूरी तरह सारा provisions हटा दिए जाए, then of course the crime will increase. Okay, and at the same time, if we'll give all the provisions, then maybe the suppression of the common man will happen. तो इसको balance करना is actually a challenging task and all, है ना? So she's the 4th year student of National Law University Delhi. Okay. Okay. Now, currently Asian Games is happening, and your options are Guangzhou, Shanghai, Beijing, Hangzhou. What is the right answer to this question? बताइए. ये सब तो अब मैंने बताया भी. अच्छा, इसका ये बताइए मोटो क्या है? What is its motto? कौन सा सिटी में? देखो, हांगझू एक्चुअली इज इन चाइना. देखो, ग्वांगझू भी एक सिटी है चाइना में, इसको कैंटोन भी कहते थे, बट ये वाला नहीं, ये वाला आंसर है. डी इज द राइट आंसर. यस. हाँ, गौरी सेठी, आदित्य गरिमा, सौम्या शर्मा, कौर विश्व. यस. व्हाट इज द मोटो ऑफ एशियन गेम्स? बताओ यार कोई. It is improving its performance on world stage in sports, है ना? India is improving its performance on world stage in sports. So we are winning a lot of medals, which is actually a good thing, है ना? तो अभी चूंकि अभी चल रहा है अभी तक, तो फाइनल जब हो जाएगा तब हम लोग फाइनली निकालेंगे टोटल की कितना गोल्ड जीता, कितना सिल्वर जीता है. स्टिल आई मीन द गेम इज हैपनिंग, सो विल नॉट बी गोइंग वेरी मच इन डिटेल. वंस द गेम इज ओवर, देन वी विल डिस्कस इट, है ना? हार्ट टू हार्ट एट फ्यूचर. यस, हार्ट टू हार्ट एट फ्यूचर इज एक्चुअली द मोटो ऑफ एशियन गेम्स, विच माइट बी आस्क्ड. ठीक है, तो याद होना चाहिए. Yes, heart to heart at future. Good. Mandeep Singh, Gauri Sethi, all right. Yes, so let me show you कहाँ पर है. ये इंडिया है, this is China, यहाँ पर है. ठीक है, this is the place where Asian Games is happening. Hangzhou. ठीक है. Okay, so Sunday also saw India taking 15 medals and all. तो ये पूरा हो जाने दो. Let's wait for the final. The entire game should be over. Then we'll be talking about it, है ना? Building bricks for the future. अब देखो क्या है कि आई होप यू आर अवेयर रिसेंटली द ब्रिक्स समिट हैपेंड इन साउथ अफ्रीका, जोहान्सबर्ग एंड ऑल. ठीक है. देन आई होप यू आर अवेयर दैट 6 न्यू कंट्रीज हैव एडेड, है ना? इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट ब्रिक्स इमर्ज आउट ऑफ द इकोनॉमिक कंपल्शन. देखो, एंड इट डज नॉट प्रोवाइड मिलिट्री और सिक्योरिटी थिंग्स. तो ब्रिक्स जो है, जैसे हमने वेरी सिमिलर टू G20, ब्रिक्स इज ऑल्सो कंसर्न मोर अबाउट इकोनॉमिक एस्पेक्ट. In fact, I hope you are aware it became popular after the economic recession of 2008. उसके बाद ज़्यादा फेमस हो गया. तो वो मिलिट्री और सिक्योरिटी एस्पेक्ट को ज़्यादा नहीं देखता है, rather it's is more concerned about economic aspect, जैसे G20 भी है, उसी टाइप का चीज़, है ना? हालांकि G20 में डेवलप्ड नेशन ज़्यादा है, बट ब्रिक्स इज मोर साउथ प्लेटफॉर्म, ग्लोबल साउथ प्लेटफॉर्म, है ना? So it does not provide military or security for support to various countries, is not involved in policing of nations and all, है ना? जैसे NATO वगैरह होता है, NATO इज प्योरली कलेक्टिव डिफेंस ग्रुपिंग एंड ऑल. ठीक है, तो वैसा नहीं है. एंड ब्रिक्स इज नॉट 36% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी एंड 47% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन. समझो, ये 47% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, लगभग आधी पॉपुलेशन कंट्री की इसमें पूरे वर्ल्ड की है. 36% ऑफ ग्लोबल जीडीपी. जैसे कि आपको पता है, आई होप यू आर अवेयर दैट रिसेंटली वी हैव सीन 6 न्यू कंट्रीज गेटिंग एडेड. ठीक है, इसमें क्या क्या है? अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, यूएई. अब देखोगे ये तीनों को देखोगे, these 3 are actually oil rich nations first, है ना? In fact, if we say we have signed CEPA with UAE
अभी रिसेंटली सऊदी के किंग आए थे, सो वी आर हैविंग वेरी गुड रिलेशन विद सऊदी अरबिया एज वेल, और विद द हेल्प ऑफ सऊदी अरबिया वी विल बी हैविंग एक्चुअली वेस्ट एशिया इकोनॉमिक कॉरिडोर, मैंने बताया है, मतलब अभी प्रपोज्ड है वेस्ट एशिया इकोनॉमिक कॉरिडोर, और यू कैन से India, West Asia, East Europe economic corridor. So even Saudi Arab becomes important. At the same time, Iran also is important. मैंने बताया है क्यों, because there is 𝗟𝗲𝗴𝗪 port. इस पर पूरा क्वेश्चन आया. Please read about 𝗟𝗲𝗴𝗪 port. There was an entire passage asked in CLAT 2021 on 𝗟𝗲𝗴𝗪 port. ठीक है? So 𝗟𝗲𝗴𝗪 port becomes important. So at least these three nations are important for us. Not only that, even Egypt is also important. Why? Because recently we have invited on 26 January 2023, we have invited Egyptian president. I hope you are aware PM Modi visited Egypt this year. He got a very famous award. Award का नाम बताइए तो. So the award PM Modi got in Egypt, उस award का नाम बताइए. So basically Egypt is important. Why? Because यहाँ पे oil and natural gas होता है एक चीज, ठीक है, इस रीजन में oil and natural gas होता है. So we will get that. Of course, oil and natural gas is very important. Almost 80 to 85% oil we import. है ना? Order of Nile. Yes, very good. So the award is called, PM Modi has got the award called as Order of Nile from Egyptian president. है ना? And what is the name of Egyptian president who came to the Republic Day as a chief guest this year? उनका नाम बताइए तो. Okay. एक चीज तो इसलिए इंपॉर्टेंट. दूसरी बात, जब इंडिया जो है, जैसे we send a lot of ships to other nations, तो यहाँ पर सुएज कैनाल है, वो भी इजिप्ट के द्वारा कंट्रोल किया गया है ना. इनफैक्ट जब यूक्रेन में वॉर वगैरह चली थी, यूक्रेन यूज्ड टू एक्सपोर्ट अ लॉट ऑफ फूड ग्रेन्स, व्हीट एक्सेट्रा, तो ये डिस्टर्ब हो गया, सो वी प्रोवाइडेड इट, व्हीट एंड ऑल. ठीक है, और भी बहुत सारी चीज में इंडिया और इजिप्ट के रिलेशंस इंपॉर्टेंट है. ठीक है, हाँ, अब्दुल फत्ताह अल सीसी, गुड, हाँ, यस. सो दीज आर द थिंग्स यू शुड बी नोइंग अबाउट. अब जब हम लोग फर्स्ट ब्रिक्स समिट की इतनी बात कर रहे हैं, सो लेट्स टॉक अबाउट समथिंग मोर. So first BRICS summit कब हुआ था? Your options are 2006, 2009, 2012, 2008. इतना BRICS की बात कर रहे हैं, 6 कंट्री ऐड हुआ इसमें, है ना. So the first BRICS summit is going to has happened or happened in the past in which year? Yes, 2009 में. देखो, ऐसे 2006 में फॉर्म हुआ था BRICS, but the first BRICS summit happened in 2009. ठीक है, उस वक्त ब्रिक कहलाता था. बाद में 2010 में एक्चुअली साउथ अफ्रीका गॉट एडेड एंड इट बिकेम ब्रिक्स. ठीक है, सो बी इज द राइट आंसर. एंड इट हैपेंड इन व्हिच कंट्री? योर ऑप्शंस आर रशिया, चाइना, यूएसए, इंडिया. फर्स्ट ब्रिक समिट हैपेंड इन व्हिच कंट्री? कोई सिटी के नाम बता देगा तो आई विल बी मोर हैप्पी. यस, येकातेरिनबर्ग, रशिया इज द राइट आंसर. ठीक है, यहाँ पे येकातेरिनबर्ग लिखा होगा, ये लिखा है, कोई बात नहीं. येकातेरिनबर्ग is a place. येकातेरिनबर्ग is a place in Russia where the first BRICS summit happened. उस टाइम पे ब्रिक कहलाता, देख रहे हो ना. फिर 2010 में when South Africa got added, it became BRICS. और अब तो इस साल जो है 6 और कंट्री ऐड हो गया, तो शायद हो सकता है नाम बदले, लेकिन अभी तक तो यही है. लेट्स सी. ओके, है ना. यस, ओके. So second two member of the BRICS, China and India, which together contain 1/3 of the world population. Yes, अगर आप BRICS में देखो, दो फेमस कंट्री इंडिया चाइना जोड़ लोगे तो 33% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन हो जाएगा. यस, है ना. दीज आर द थिंग्स. बोथ आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज एंड ऑल. तो ये सब बता रहे हैं, है ना. बोथ कंट्रीज अंडरस्टैंड बायलैटरल रिलेशन और ऑल. While India and China have bilateral challenges at the political and diplomatic level, like Doklam standoff and all. तो कुछ इश्यूज हो गया था इंडिया और चाइना से, जैसे डोकलाम, दिस इज यू विल फाइंड इट नियर एक्चुअली सिक्किम रीजन. Similarly, Galwan Valley clash हो गया था 2020 में. So there are some issues with China. That's the thing and all, है ना. In fact, Xi Jinping skipped the G20 summit. इस बार G20 summit में Xi Jinping नहीं आया. He sent his premier, the second man, but he himself did not come. So these are some of the things and all talked about. Third, there has been polarization between US and other parts of the world. Polarization मतलब क्या होता है? जैसे poles होता है ना, positive and negative charge. That's the pole, है ना. So polarization, especially after Russia-Ukraine war, तो एक तरह से pro-Russia bloc versus pro-Ukraine bloc. तो pro-Ukraine मतलब है जो वेस्ट के नेशंस है ना, और रशिया के जो सपोर्टिंग. So sort of polarization has happened and all, and this is very evident, especially after Donald Trump's government and all. That is what the author is talking about. So China has made strides in communication infrastructure and all. ये सब बता रहे हैं. Belt and Road Initiative आप जानती होगी, ये सब चीज, these things you know, है ना. So these are the things being talked about. China is not a dominant player, democratic country such as, हाँ, अगर China is not considered as democratic. However, India, South Africa and Brazil are. अगर आप BRICS में देखो, BRICS,
So Brazil, India, and South Africa are comparatively more democratic as compared to the other two, है ना? So these are the things. Similarly, the way refugees are being treated in Europe do not give a positive perspective. तो अब refugee की बात कर रहे हैं कि yes, that is what US have flouted WTO rules and all according to the author. ठीक है. So they are the things. मतलब ऐसा कहा जाता है actually. There is a people who say, I mean the scholars, they say कि BRICS is considered as a challenge to US hegemony, है ना? US hegemony के लिए challenge वगैरह and all, है ना? So these are the things being talked about, ठीक है? The search for an alternative such as non-alignment to tackle Cold War. Non-alignment तो आप जानते हो कि when there was Cold War, there were two blocks, USSR led by Warsaw Pact, USA led by NATO, and India chose NAM. NAM मतलब ना हम इधर जाएंगे ना इधर जाएंगे. So will not be joining either of the two military blocks, है ना? So अब देखो ब्रिक्स में क्या उसी तरह की चीज है या what's there and all. अब ये सब नॉन अलाइनमेंट वर्ड नहीं लिखते हैं. अब we use the word strategic autonomy, ये सब वर्ड लिखते हैं इंडिया के लिए कि we have strategic autonomy. So we will decide whichever is good for our national interest. ठीक है, ठीक है. Fourth, the US dollar has been dominant global currency. This time we have seen demise of travelers taken off. अभी तक हम लोगों ने देखा है कि US जनरली डोमिनेंट करेंसी US डॉलर. बट आपने देखा होगा वी आर सीइंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डी डॉलराइजेशन. ये सब आजकल न्यूज में आ रहा है. मतलब क्या हुआ? It means that actually there are some proposal that the countries will be exchanging the goods and services through not dollar rather than domestic currency. जैसे for example India and Russia were planning to have rupee ruble trade. हमने बताया था रूपी रूबल ट्रेड. फिर अभी इंडिया रूपी दिरहम ट्रेड की बात हुई है यूएई के साथ, है ना? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो दुबई वगैरह से कंट्री से, है ना? सो इससे होता ये है कि अगर आपस में अपने इससे होता है तो इसको ज्यादा थोड़ा अच्छा माना जाता है इस कंट्री. जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू आर डूइंग रूपी दिरहम ट्रेड, इट इज गुड फॉर अस, फॉर इंडिया एंड एज वेल एज यूएई. ठीक है, तो इसको डी डॉलराइजेशन भी कहते हैं कि अब जो है सिर्फ यूएस का ही नहीं चल रहा, अपना डोमेस्टिक करेंसी पीपल आर यूजिंग इट एंड ऑल, है ना? सीपा भी साइन हुआ यस यूएई के साथ. गुड. फाइनली द कॉन्टिनेंट दैट प्रॉमिसेस इकोनॉमिक ग्रोथ इज अफ्रीका. यस, अब ये बताना चाह रहे हैं कि अफ्रीका में ह्यूज पोटेंशियल है इंडिया के लिए भी और ऑफ कोर्स. हाँ, क्यों? देखो एक्चुअली अफ्रीका है ना मिनरल रिच रिसोर्स है, ये शायद आपको पता होगा. यू नो दीस थिंग्स, है ना? जैसे फॉर एग्जांपल इस रीजन में आपको ऑयल नेचुरल गैस मिलेगा बहुत, ऑयल एंड नेचुरल गैस. सिमिलरली माली में आपको यहाँ गोल्ड बहुत मिलेगा. ठीक है, यहाँ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो में आपको आई थिंक कोबाल्ट वगैरह, कॉपर वगैरह सब रीजन मिलता है. यहाँ पर टिन वगैरह मिलेगा. तो इसमें आपको जैसे साउथ अफ्रीका में यू विल फाइंड इट डायमंड. और आपको पता है इंडिया जो है ना, इंडिया का जो एक सिटी है ना, आई विल बी आस्किंग दिस क्वेश्चन. देयर इज अ सिटी इन इंडिया व्हिच इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द लार्जेस्ट डायमंड कटिंग सिटी, डायमंड कटिंग इंडस्ट्री. यू विल फाइंड इट देयर. कौन से शहर में मिलता है? इंडिया का कौन सा शहर है जहां पर डायमंड कटिंग बहुत फेमस है? कोई बता सकता है? एनीवन? और इंडिया इज फेमस फॉर एक्सपोर्टिंग ज्वेलरी एंड ज्वेलरी प्रोडक्ट्स. हाँ, सूरत. वेरी गुड, गुड. हाँ, सो सूरत इज इन गुजरात इज फेमस फॉर वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डायमंड कटिंग इंडस्ट्री. और इसीलिए अगर हम लोग डायमंड मान लो इंपोर्ट करते हैं और डायमंड कटिंग करके तराश के दूसरी जगह भेजेंगे, दूसरी जगह सेल करेंगे, सो ए ज्वेलरी एक्सपोर्ट इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ इंडिया. ठीक है, तो ज्वेलरी खास के फिनिश्ड ज्वेलरी गुड्स, है ना? जैसे मतलब डायमंड को देखो, डायमंड जो होता है ना उसको तराशना पड़ता है. आपको ये सब तो पता ही होगा फुली, है ना? आई मीन इट नीड्स टू बी कट इन अ स्पेसिफिक वे टू लुक ब्यूटीफुल, है ना? टू शाइन, है ना? So these are done actually in Surat and all. Yes. The fact is that while Europe talks about connectivity, a state of Gibraltar's crossing is still not in place, partly due to geopolitics, partly due to other concerns. देखो यहाँ पर है ना, ये इंडिया है, ये यूरोप है, ये अफ्रीका है. यहाँ पर जो है ना, ये इसको कहते हैं स्टेट ऑफ गिब्राल्टर. So state of Gibraltar actually, so if you want to go from Atlantic to Mediterranean Sea, ये जो रास्ता से जाएगा ना, स्टेट ऑफ गिब्राल्टर है. And this is controlled by UK, not by Spain, not by Morocco. यहाँ पे जो रीजन है स्टेट ऑफ गिब्राल्टर, ये यूके कंट्रोल करते हैं. ठीक है, सो बेसिकली दैट इज व्हाट इज आल्सो बीइंग टॉक्ड अबाउट एंड ऑल. ठीक है, ठीक है. तो अब देखते हैं ब्रिक्स में नेक्स्ट समिट में क्या होता है. लेट्स वेट फॉर दैट, है ना? वर्ल्ड रिपोर्टेड ट्वाइस एज मेनी कॉलरा केस इन 2022 एज इन 2021. वो ये भी सीरियस बात है कि 2021 के मुकाबले अकॉर्डिंग टू WHO द कॉलरा केसेस गॉट डबल्ड. कॉलरा मोस्टली हैपेंस बिकॉज ऑफ कंटामिनेटेड वाटर. पानी गंदा है ना तो उसी से होता है कॉलरा वगैरह. सो इसी की बात कर रहे हैं. तो दैट इज व्हाट विब्रियो कॉलरा है, इससे होता है.
these are the things being talked about. इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा कि why this is the case. तो ये कोई अच्छी बात नहीं है, इसका मतलब है कि गंदा पानी और ज्यादा लोग चाहे तो पी ले रहे हैं, है ना. So this is also a serious thing and all. Okay. So yes, if you see it mostly, they will find it in Africa and Asia countries. You will find it more. And if you see it in the recent years, it is more. ये बताना चाह, है ना. तो ये सब रीजन में अफ्रीकन कंट्रीज, है ना, इंडिया एंड ऑल, इंडिया पाकिस्तान रीजन, यू विल फाइंड, आई मीन नॉट इंडिया, आई मीन पाकिस्तान रीजन एंड ऑल दीस कंट्रीज. काउंटिंग डेथ्स इन इंडियाज प्रिजन, ये एक रिपोर्ट आई थी, इसको थोड़ा सा अपने से पढ़ लेना. सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन प्रिजन रिफॉर्म्स फाउंड दीज थिंग्स एंड ऑल. ठीक है, इसको आप थोड़ा सा एक बार पढ़ लेना. जस्ट हैव एन आइडिया दैट यस इन जेल्स देयर हैव बीन केसेस ऑफ अननेचुरल डेथ्स एंड ऑल. तो कहाँ पे कितना कितना है, जस्ट हैव एन आइडिया. IAF likely, Indian Air Force likely to induct Astra BVR air to air missile by the year end. ठीक है, तो ये मिसाइल होता है, एयर टू एयर मिसाइल्स को कहते हैं. ठीक है, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड इज अ कंपनी विच मेक्स दीज थिंग्स. जैसे बहुत सारी कंपनी होती हैं, जैसे DRDO है ना, ये बनाती है ना. तो इसी तरह एक भारत डायनेमिक्स लिमिटेड भी होती है. ओके, दिस इज आल्सो इंस्ट्रूमेंटल इन मेकिंग दिस द डिफेंस इक्विपमेंट्स. ठीक है, सो बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स को कहते हैं. सो दीज आर द थिंग्स. आदित्य एल1 वी हैव डिस्कस्ड इट, कि यहाँ पर जाएगा आदित्य एल1. सो व्हेनेवर इट विल बी इन द न्यूज. तो ये एक्चुअली साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेक्शन में था. व्हाट इज लाग्रांजे पॉइंट, वी हैव डिस्कस्ड दीस थिंग्स इन द पास्ट, है ना. 1.5 मिलियन किलोमीटर अर्थ से देखो 150 मिलियन किलोमीटर जो सन के बीच की दूरी है, और यहाँ से 1.5 मिलियन किलोमीटर पे L1 होगा, और इसके ऑपोजिट पे L2 होगा. यानी यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस, यहाँ की यहाँ की डिस्टेंस बराबर होती है, आपको पता होगा, है ना. 1.5 मिलियन किलोमीटर, है ना. वी हैव डिस्कस्ड दीस थिंग्स. Okay, yes. So this is all about today's class. Please subscribe to our channel, follow us Instagram, Facebook, Telegram, and download the BYJU'S exam prep app. Please guys, आप लोग mock attempt करो. There is a request to all of you. Please attempt all those mock tests जितना ही paid classes के हैं. हम लोगों ने mock test के लिए video analysis भी बनाई है. Please watch this. Those अगर नहीं कम से कम 2x स्पीड पर 1.5x स्पीड पर वो सब देख लो. ठीक है, उसमें से क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी है. ओके, सो बिकॉज जैसे मैंने आज क्वेश्चन पूछा और वो मॉक एनालिसिस मैंने पढ़ाया था कारोलिन्स्का इंस्टीट्यूट, नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी, और बच्चे नहीं आंसर कर पाए. इसका मतलब आप लोगों ने शायद नहीं देखा होगा. बट प्लीज देयर इज अ रिक्वेस्ट, whenever you attempt the mock, please attempt the mock, analyze it and watch the videos that we are providing. अगर आपको मान लीजिए नहीं हो रहा है तो स्पीड करके थोड़ा सा 1.5x स्पीड पर देख लो, लेकिन देख लो एटलीस्ट एक बार. ठीक है, so this is all about today's class. Thank you everyone, thanks for watching, have a nice day. Please press the like button everyone. ठीक है.